सुबह आए तो हमको 22 अगस्त को एडमिट हुआ इसको लेके, और 29 अगस्त को इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो यहाँ तो मेरा कोई छत नहीं है, मेरा कोई रिलेशन का नहीं है यहाँ पे। तो जब मेरे को रात में 9:30 बजे करीब लोग डिस्चार्ज किए तो बहुत परेशानी में कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर ना हो तो हमको यहाँ पे आज रात तक रहने दिया जाए, सुबह हम कहीं चल के व्यवस्था करेंगे। तो गार्ड लोग बोले कि नहीं, जब तुमका डिस्चार्ज होगा तुमको 1 मिनट रहने का हक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत हमको परेशानी हुई। फिर देखे बहुत लोग फुटपाथ पे सोए थे वहाँ पे, हम भी चादर वादर अपना निकाले और वही फुटपाथ पर 2 दिन अपना मतलब रहे हम। When these children come from far off villages, they generally do not have a clean, hygienic place to stay. So most of these families then land up staying on the streets outside the hospital. The spin-off of all the constraints these families face, which includes lack of money, place to stay, is that most of these families either do not start their treatment, or even if they start their treatment, they tend to abandon the therapy. And the biggest unmet need was a place to stay. St. Jude has filled in that gap. राहायला रूम नाही होते, काहीच नाही होतं. येणं जाणं ट्रेनमध्ये करायचं, नानाच्या इथे बी वातावरण नाही होतं. अशामध्ये मतलब कोणी एवढं साथ नाही देत. जसं बा सेंटरमध्ये आम्हाला जेवढं भेटलं तेवढं आम्ही मतलब जिंदगीमध्ये कधी विसरणार नाही. St. Jude is a home away from home for families and children fighting their battle against cancer. In St. Jude's, it's not just the sick child who's taken care of. We take care of the entire family. In all our centers, there are small units where a family can stay. There's a kitchen where the parents can cook their own food like they would do in their own homes. So if that facility is holistic in its provision of care, which includes providing housing and care for such children, provision of education, counseling, emotional support, financial support, and finally providing them that unique family environment, then that actually is a major part of the treatment. आम्ही त्या वन सेंटरमध्ये गेलो तर आमची मतलब लाईफच बदलून गेली. मॅडमने पहिल्याच दिवशी आम्हाला राहायला रूम दिली. मग त्यांनी आम्हाला इकडे आल्यानंतर रूमचं सगळं दाखवलं, असं असं करावं लागते, तसं मग यांनी चाब्या घेतल्या. आमचं तिथे 2 माणसं पाठवून चपलांचं माप बीप सगळं जसं घरी भेटते तसं त्यांना आमचं खूप मदत केलेली आहे. यहाँ पे जैसे बेड है, एक अलमारी है, पूरे बर्तन है किचन के, चम्मच पासून तर सांडशी गॅस सगळं भेटतं. सकाळी दूध भेटते, संध्याकाळी सेब, बारिशमध्ये छाता भेटते, रेनकोट देतात. और बच्चों के लिए जैसे हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी है, पेशेंट को या एक परिवार को जो चाहिए वहाँ हर सुख सुविधा यहाँ से मिलता है हम लोगों को. घर से भी अच्छा मिलता है. So when these families come in, we have to start our basic training from how to use the toilet, how to flush it, and why do you need to pour water and keep it clean. To explain things more deeply, we've come up with simple activities through which the parents learn. For fathers, we have a male social worker who comes in and his main responsibility is to de-stress the fathers through play. मम्मीचं मन समाधान करण्यासाठी कार्यक्रम ठेवत असतात. थोडं मन समाधान होतं. मुलांचा आजाराविषयी थोडा असं विसरून जातो. कसं बोलायचं, कसं वागायचं, राहायचं हे पण समजलं त्यातून. Every evening there is some activities which are planned for the kids. The basic reason to plan these activities is the motivation of the child to go back to school has to be kept alive. सगळं चांगलं, खेळायला चांगलं, अजून फिरायला आणि तबला वाजवायला. कभी खेलती हूँ, कभी सोती हूँ, कभी मस्ती करती हूँ. ये सेंटर बहुत अच्छा है. इधर कंप्यूटर खेलते हैं, बाद में अच्छे दोस्त हैं इधर. अच्छा लगता है. I think the most important thing which I think about St. Jude is that this provides them with counseling for the treatment,
telling them about the basic care of the child and the family, how to take care of this child when child is in hospital, how to take care of their child during their period of treatment, how they should follow up with the doctors. So actually it's a complete care, I would say. It's very rare to see a St. Jude child leaving or declining treatment midway and going away. The bond of going through the same pain binds all the families together like one big family. Every day together they prepare themselves for all the challenges they have to face during the treatment of cancer, be it giving their child chemotherapy, be it taking traumatic injections. Whenever there is a child who's sick in the hospital, there are mothers who would cook lunch or dinner and take it for the child back there. So they treat all the children as their own, like an extended family. We have a child right now in our ICU and his name is Golu. He was on ventilator, artificial life support for 2 days, and now he's come out of that. I could see each and every member waiting anxiously outside the ICU intensive care for the news that hope he's stabilized, hope he's going to come out of it. The most touching, of course, was today when I met a father telling me that he doesn't want to go home because his child's finished treatment, because he wants to wait for Golu to recover, meet this child and then go home. I don't see any such thing happening in the past in my entire medical experience. फॅमिली म्हणून आम्ही राहतो इथे. यहाँ पे आने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमको जो घर हमारा बिछड़ा हुआ था हमको दूसरा घर मिल गया. हमको तब से आज तक कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मेरा बेटा को कैंसर है और मेरा इतनी बड़ी बीमारी है. इथल्या मॅडमचं प्रेम, मुलांना खेळवणं ते बघून अजून आम्ही घरचं दुःख थोडं थोडं विसरत गेलो. जसं घरी नाही भेटत तसं इथं प्रेम भेटलं. हम लोग को मैडम प्यार करती, दवाई से लेकर सब कुछ मैडम करती. रोना नहीं, रो नहीं तो बेटा, रोना नहीं है. और खाना नहीं खाए तो मैडम खाना खिलाती. बहुत खुश है. फायदा झालेला आहे. इथं आल्यापासून ओमकारला काहीच झालेलं नाही. सुरुवातीपासून कोणतं इन्फेक्शन नाही, काही नाही. स्वच्छताच खूप आहे इथे. आज 1.5 वर्ष राहिलं पोरगीला, आतापर्यंत आम्ही ॲडमिट नाही केलं. मतलब जिंदगीमध्ये आल्यानंतर कितीक सांगा कितीक ठा हे खूपच आहे. पण जसं मॅडम भेटला तर आम्हाला देवरूपच भेटलेलं आहे. इस संस्था से मेरा बच्चा अच्छा होकर जा रहा है और लोगों के तमाम बच्चे अच्छे होकर यहाँ से गए हैं. तो इस सेंटर और संस्थाएं खुले, पूरे देश में खुले, जहाँ नए शहर में असहाय आदमी है उसका मदद करने के लिए. इस संस्था के मैं आजीवन ऋणी रहूँगा और यहाँ के लोगों को मैं आजीवन ऋणी रहूँगा कि जो मेरे बच्चों को इतना अच्छा जगह मिला है.